Hi everyone, I am Arpita Sharma, your educator from Arpita Sharma classes, and today we are going to discuss a very important topic that is asked by so many students day and night via mail to me, right? That is how to choose, how to select our optional. We have so many subjects in the optional list which is given to us by UPSC, but how to know in which subject we have interest, right? How to develop interest in a particular subject and how to find out the resources, how to start the preparation. In optional there are two papers, right? Paper 1 and paper 2. So how to zero out the resources, how to determine the sources, the good sources for that subject, and how to start with the optional. Now कितने ही बच्चे हैं जो कि अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने तैयारी, right? There are many students who have just started their preparation, right? So the in the first phase of your preparation, within a month if you select your optional, that will be very beneficial for you, or else आगे जाके confusion create हो जाएगा. So let us see in this session how to select an optional, what is the success rate of the optional subjects, how much is the competition, what should be the syllabus, how can we look at the syllabus, previous year question papers, how can we find the resources, everything we are going to discuss in this class. Okay, so this is a very highly demanded session by all the students. Let's start. But before that, here's a small announcement for all of you. Unacademy Plus has also launched its own UPSC CSE optional category, right? So over here, separately, if you just want to prepare for optional via online classes, if you are a working professional student, you do not have that much time to devote to self-study in optional category, or you are a beginner in UPSC category and you need guidance from a highly specialized educator in your optional, then Unacademy Plus has provided that platform also. Now you can separately take subscription for optional subjects also. Here there will be dedicated focus on optional subject preparation, optional test series will be provided, comprehensive enhancement courses will be there, doubt clearing sessions will also be there, right? And also the existing Plus subscribers, if you have already taken Unacademy Plus subscription, then you will get free online ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन एज वेल. अगर आपने पहले ही 31 अक्टूबर से पहले ही आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना, तो आपको ऑप्शनल कैटेगरी भी फ्री मिलेगी. ठीक है. सो देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर लिस्टेड बाय यूपीएससी एज ऑप्शनल. देर आर क्लासेस ऑन ऑल दीज सब्जेक्ट्स ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो. दिस इज द प्राइस चार्ट you can see over here. Over and above you will get 10% discount also if you use this code Sharma20. तो आप जो भी अपना ऑप्शनल सिलेक्ट करते हो ना, आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्लान में उसको आप ऑनलाइन क्लासेस अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो. फॉर 1 month 5,000 rupees, 6 months 22,500, 12 months 27,500. I will recommend you can take 6 months optional subscription, right? 22,500, and over here you can use this code Sharma20 to get 10% discount also. So 2,500 का तो आपको डिस्काउंट ही मिल जाएगा इधर. ठीक है. So you can opt for 6 month subscription package for optional on Unacademy Plus, any subject that you want to study. And plus अगर आप optional लेते हो ना, you will get access to all these subjects. Once you take the subscription ना of optional subject, there is no separate subscription for each and every subject. Optional subscription अगर आप लेते हो तो आपको सारे subject मिलेंगे, राइट? तो आप अपना सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अगर आप चाहते हो मुझे सोशियोलॉजी पढ़ना है, बट फिर आपको लग रहा है सोशियोलॉजी का सिलेबस नहीं मैनेज हो पाएगा, आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स एक्सेस कर पाओगे. वन सब्सक्रिप्शन विल हेल्प यू टू एक्सेस ऑल दी सब्जेक्ट्स for the period for which you have taken the subscription for. Okay, so you can go to Unacademy Plus for taking the coaching online guidance for your optional, right? Chalo, let's start the session. Now you all know that इन योर यूपीएससी सीएसई मेंस, जब आप मेंस की बात करते हो यूपीएससी में, तो 4 पेपर तो मेन आपके है ही है. देयर आर 4 मेन पेपर्स दैट आर रिलेटेड टू योर जनरल स्टडीज, राइट? दीज पेपर्स आर जनरल स्टडीज पेपर 1, that is Indian heritage and culture, history and geography of world and society for 250 marks. General studies paper 2, governance, constitution, polity, social justice, international relations for 250 marks. General Studies Paper 3, Technology, that is Science and Technology, Economic Development, Biodiversity, Environment, Security, Disaster Management, 250 marks. And Paper 4 is Ethics, Integrity, Aptitude, again for 250 marks. Okay, I have prepared these preparation strategy video for all these papers. Link is given in the description box. Okay, मैंने इस सभी papers के ऊपर strategy video बनाई हुई है, link आपको description box में मिल जाएगा. चलो, now moving forward, these are the 4 general studies related paper.
ये तो आपके 4 जनरल स्टडीज रिलेटेड पेपर हो गए, ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी। ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो लिस्ट दी है यूपीएससी ने वो देख लेते हैं। Now, what is the optional subject in UPSC? For the civil service examination, UPSC provides a list of optional subjects. That is paper 5. जो आपका paper 5 होता है ना, paper 1 to paper 4 तो हमने देख लिया. Now we are talking about the paper 5. Paper 5 is optional. Paper 5 आपका हो जाता है optional, ठीक है। और ये जो पेपर है आपका, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, right? It is divided into 2 parts. That is paper A and paper B. ठीक है, A and B ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। So for civil service examination, UPSC provides a list of optional subjects. Candidates have to choose one optional for the mains exam. आप पहले ना क्या होता था कि 2 optionals होते थे, right? Earlier in 2013, 2012, 2011, you had to choose 2 optional subjects for first paper and second paper. But now they have changed the pattern since 2013, and now you have to choose only one subject, which will be divided further into 2 parts. एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होंगे, ठीक है। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैज 2 पेपर्स एंड ईच पेपर अकाउंट्स फॉर 250 मार्क्स। ये भी 250 मार्क्स का है, ये भी 250 मार्क्स का है, तो टोटल कितने हो गए, 500 मार्क्स का आपका हो गया। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट योर ऑप्शनल विल डिसाइड योर फ्यूचर इन द मेंस, राइट। मेंस में आपका फ्यूचर क्या होता है, मेंस में आपका क्या स्कोर रहता है, आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो या नहीं, ये आपका ऑप्शनल पे हेविली डिपेंडेंट होता है। इट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन ऑप्शनल बिकॉज इट इज फॉर मैक्सिमम मार्क्स। बाकी पेपर्स तो 250 के हैं, बट ऑप्शनल 500 का है। एंड हाउ मच यू नीड टू स्कोर फॉर मेकिंग योर मेंस स्ट्रॉन्गर। मेंस में अगर आपको श्योर शॉट ये सुनिश्चित करना है कि आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो, तो आपको कम से कम 315 प्लस लाने पड़ेंगे, राइट। You have to at least score 315 plus marks in optional subject out of 500. Then you can be very sure that you can enter interview. Obviously, your GS paper 1 to GS paper 4 should be, you should be scoring well in these papers also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में 315 लाए और बाकी सब में कम है नंबर तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। You have to focus on these papers as well. But equally important is optional. And if you score 315 plus in this paper, राइट, देन श्योर शॉट गारंटीड होता है कि हाँ इंटरव्यू तक तो आप चले जाओगे। तो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर गिविंग योर मॉक टेस्ट, कम से कम 250 से ऊपर स्कोर करो इन द मॉक टेस्ट। ट्राई टू स्कोर 250 प्लस, राइट, नॉट लेस देन 250 इन ऑप्शनल आउट ऑफ 500, ठीक है। सो कैंडिडेट्स कैन चूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द लिटरेचर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल द असमीज लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, अदर इंडियन लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स या सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी ही चुनना है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ लिटरेचर सब्जेक्ट्स व्हिच इज आल्सो गिवन। सो इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन लिटरेचर सब्जेक्ट्स और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, यू कैन चूज दैट आल्सो। सो द पेपर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, एज यू ऑल नो इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव। Each paper for UPSC mains exam will be of 3 hours duration. हर पेपर जो होगा वो 3 घंटे का होगा। And question papers other than the literature of language papers will be set in Hindi and English only, right? Just like the prelims. जैसे prelims होता है ना, there are questions written in Hindi also and English also, so that both the students can understand. Here also questions will be in Hindi, English both. So if you understand English, you can answer the questions accordingly. If you understand Hindi, you can answer the question accordingly. Plus when you will fill your DAF ना, जब आप prelims clear करने के बाद DAF भरोगे, detailed application form, there also you have to mention your medium of language which you choose, in which language you want to write your answer. As this is not the case that you can write your answer in Hindi from GS paper 1 to GS paper 4 and in English in optional subject. No. राइट, ऐसा नहीं है कि बस चलो जीएस पेपर 4 में मैं हिंदी में लिख दूंगा, बाकी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू चूज वन मीडियम, ओके। The optional paper plays very important role in the UPSC mains exam. So let us have a look at the list of the optional subject. Now also remember that before GS paper 1, before giving these papers, there are 2 papers, right? एक तो आपका इंग्लिश का हो जाता है पेपर A and second is paper B, that is Hindi, a regional language, and essay paper also. Right, now these English and Hindi language papers, now if you do not qualify them,
then your rest of the answer sheets will not be checked. Just like prelims, these are also qualifying in nature. ये इंग्लिश और हिंदी के जो पेपर्स है ना, अगर इसमें पास नहीं होते, 25% marks you need to score in these two papers, then only your rest of the papers will be checked. If you fail in these papers, then directly mains से बाहर हो जाओगे, then directly you will be out of the race from mains, right? So you make sure that you prepare your basic grammar in English and basic grammar in Hindi. Okay, so over here you can see that the list of optional subjects in UPSC is given: agriculture, animal husbandry and veterinary science, anthropology, botany, chemistry, civil engineering, commerce and accountancy, economics, electrical engineering, geography, geology, history, law, management, mathematics, mechanical engineering, medical science, philosophy, physics, pol science and international relations, psychology, public administration, sociology, statistics and zoology. Okay, so these are the subjects provided by UPSC as optional subjects. Now there is a list of literature optional subjects also. If you do not want to select the static subjects, you can opt for literature as your optional also. आप literature को भी select कर सकते हो as your optional. So let us look at the list. Assamese language, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili. Aspirants can opt for a literature subject as well for their optional, even if they had not taken that language as their graduation subject. मान लो आपने असमीज को graduation subject में नहीं लिया था, but आप फिर भी इस पे opt कर सकते हो. Even if you did not have Bengali as your graduation subject, still you can opt for it. There will be two papers. Each paper is of 250 marks and the languages prescribed here are from the 8th schedule of the Indian Constitution. Only those languages you can pick if you want to pick optional as literature, which are mentioned in the 8th schedule. The next set of languages are Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu and English. And these are literature subjects, okay? So the books or the poems, the books, the poems, all the important literary works which is done in this language, that you will have to study as per the syllabus. ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये हो गया आपका literature subject का list. ठीक है, this is the list for the literature subject. चलो आगे बढ़ते हैं. Now let's look at the list of optional subjects. Now which of these optional subjects is first thing that you need when you pick up or any optional subject? First thing that you need to remember is that it should match with the other GS papers. ठीक है, with the other GS papers. That means if the syllabus is matching, then it will be easier for you to complete your optional within the stipulated time before your prelims. Even before your prelims, you will be able to finish your syllabus of optional if it is clashing with your other GS papers. For example, let us have a particular example, right? Now over here you can see, if we look at history, अगर हम history को देखें, it is present in GS paper 1 also in mains. Mains का GS paper 1 जो है उसमें भी ये present है. And it is completely present in prelims also. ये तो prelims में भी present है, right? Except for world history which is in GS paper 1. Okay. Now let's have a look at pol science, political science and international relations, which is present in GS paper 2. It is also present in your essay paper. ठीक है, NATO के ऊपर essay लिखने को आ जाता है. ठीक है, India and US Indo-Pacific strategy, the Belt and Road Initiative. On these topics they can ask you essay question also. Okay, GS paper 2 हो गया, essay हो गया. So this will be your pol science. Then prelims maybe it is important. Why? Because when we look at international relations, if you are studying them, current affairs, if you are updating yourself daily, then it will help you in prelims, because many location wise questions, map based questions they are asking, many questions related to the war which is going on in Syria or in Afghanistan, they are asking question on that also. So it is clashing with your GS paper 2 essay and prelims paper also. Now if we look at over here the economics optional, then it is present in your GSM 3 also. GSM 3 में economics है, and also your prelims paper, आपके prelims paper में भी है. ठीक है. Similarly, public administration, it is clashing with your GSM 2. It is clashing with your essay paper. Essay में भी public administration के basis पे question आ जाता है, पंचायती राज etc, secularism etc. ठीक है, इसके ऊपर question आ जाता है. Clear?
तो इस तरीके से आपको ना ज्योग्राफी, इफ यू लुक एट ज्योग्राफी अगेन जीएसएम 1 से इट इज क्लैशिंग विद जीएसएम 1 एंड ऑल्सो विद प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के साथ भी ये क्लैश कर रहा है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो क्लैशिंग विद प्रीलिम्स बिकॉज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू ऑल्सो स्टडी अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट, right? What is DPSP? What is the comparison between fundamental right and DPSP? Fundamental duty and fundamental right? Constitutional amendments? All these things are in public administration and they are also a part of prelims, right? तो जब आप prelims की तैयारी कर रहे होगे ना, तो कम से कम 10 to 20% your public administration paper A will be also be, you will be preparing it simultaneously, right? So this is how you have to first identify those optional subjects which are clashing with directly with your GS paper. वो optional subject पहले आप identify करो जो आपके directly GS papers के साथ clash कर रहे हैं, right? So we have selected at least 5 subjects, हमने at least 5 subjects select कर लिए, okay? Good. Now moving ahead, आगे बढ़ते हैं. Anthropology is also important. It is also clashing with GSM 1. Social issues, right? जीएसएम 1 के साथ क्लैश कर जाता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये बात सही हो गई. एग्रीकल्चर, इट इज समवॉट क्लैशिंग विद जीएसएम 3 बट यू नो वेरी लिटिल पार्ट ऑफ इट इज क्लैशिंग विद जीएसएम 3. बहुत छोटा सा पार्ट है इसका जो जीएसएम 3 से क्लैश करता है. सोशियोलॉजी, अगेन सोशियोलॉजी आपका क्लैश करता है जीएसएम 1 के साथ, राइट, but not with prelims. GSM 1, that is a very little part that is clashing with GSM 1, right? But the major topics which are clashing with your GS papers are economics, geography, history, pol science and international relations, public administration. These are the 5 subjects majorly which are clashing with prelims also, जो prelims के साथ भी clash कर रहे हैं, right? Now the step number 2. अब आती है बात step number 2 की. Now out of these subjects, इन सभी subjects में से go through the first of all the syllabus of all these subjects. इन subjects के जो आपने, देखो ऐसा नहीं है कि agriculture से लेके zoology के सबका syllabus देखना है. No, do not waste time in just looking out for the syllabus of right from agriculture till zoology. No, that will be a time waster. What if you are from humanities background and you haven't studied medical science ever in life, right? Then that will be a waste of time ना. तो logically go through the syllabus of the 5 identified subjects. अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, अपने interest level से 5 subjects को identify करो. The identification is not just on the basis of clashing with GS papers. It also involves your own interest. आपका interest भी इसमें added है, ठीक है? Add your own interest and the clashing with GS papers and then select 5 subjects. तो in the first step you have to select 5 सब्जेक्ट्स. पहले स्टेप में आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लो ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड द clashing of those subjects with GS papers. ठीक है, it can be anthropology, chemistry, mathematics, physics also if you are a science or non-med student. It can be management, law, mathematics, accounts if you are a commerce student. If it can be history, geography, economics, right? That is on your own will. It does not even relate to your graduation history or your any other history, 11th 12th history. आपने किस सब्जेक्ट में 11th 12th करा, आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया, फर्क ही नहीं पड़ता. आपका इंटरेस्ट मैटर करता है. बिकॉज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड ना, यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस एंड यू विल नेवर बी एबल टू फ्रेम आंसर. इंटरेस्ट नहीं होगा, इफ देयर इज नो इंटरेस्ट you will not study properly. If you will not study properly, you will end up cramming things. If you end up cramming things, no output is going to come out from your hands or from your mind while writing answers in mains. रट्टेबाज, देखो इंटरेस्ट नहीं होता तो रट्टेबाजी करते हैं तो दिमाग में अपनी तरफ से आंसर फॉर्मेशन की टेक्निक नहीं आ पाती, वो नहीं आ पाती तो मेंस में आंसर नहीं निकलता, आंसर नहीं निकलेगा तो मेंस क्लियर नहीं होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंटरेस्ट भी है, ठीक है. सो सेलेक्ट 5 सब्जेक्ट्स ऑन दिस स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेप. सेकेंड स्टेप इज गोइंग थ्रू द सिलेबस ऑफ दीज 5 सब्जेक्ट्स. जो आपने 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं उसके सिलेबस को देखना है. आफ्टर गोइंग थ्रू द सिलेबस ऑफ बोथ पेपर ए एंड पेपर बी, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना ऑप्शनल, दोनों के ही पहले आपको सिलेबस देखना है. आफ्टर गोइंग थ्रू द सिलेबस यू विल एंड अप विद ओनली 2 or 3 सब्जेक्ट्स, राइट. सिलेबस देखने के बाद क्या होगा, यू विल एंड अप विद 2 to 3 सब्जेक्ट्स ओनली, एंड अप चूजिंग 2 to 3 सब्जेक्ट्स ओनली, राइट. तो आप फॉर एग्जांपल इफ यू एंड अप चूजिंग इकोनॉमिक्स, इफ यू थिंक इकोनॉमिक्स यू कैन मैनेज इट बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री and public administration,
राइट अगर आपका ये फाइनल आपने 3 सब्जेक्ट्स चूज किए, नाउ यू हैव टू सेग्रीगेट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. व्हाट यू विल डू, यू विल डाउनलोड लास्ट 3 years क्वेश्चन पेपर्स, राइट, विच आर इजीली अवेलेबल ऑन यूपीएससी's वेबसाइट. जो 3 साल के क्वेश्चन पेपर है ना, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे वहां पर अवेलेबल है. इफ यू डू नॉट फाइंड द क्वेश्चन पेपर ऑन यूपीएससी's वेबसाइट, वैसे तो होगा नहीं, वहां है, देन गो टू एनी अदर रेप्यूटेड वेबसाइट और जस्ट इन द गूगल सर्च ना, जस्ट राइट दैट, जस्ट राइट ऑप्शनल, अपना ऑप्शनल का नाम, द नेम ऑफ योर ऑप्शनल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी, राइट. तो वहां पर ईयर वाइज यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज. इन द गूगल सर्च बार ना, जस्ट राइट योर ऑप्शनल्स नेम एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी एंड यू विल गेट द सेट ऑफ क्वेश्चंस, right from 2013 you will get the question paper, but you have to just download last 3 years, पिछले 3 साल के question paper download करो, go through the types of questions they are framing. Now you will now ask, ma'am, we have not started preparing for optional, how do we judge a particular optional on the basis of questions? See, you all are mature enough, because you must be 21 or you must be 20 or 19, you are mature enough to know by the questions, by the type of questions, if you are ready to go in that detail or not. क्वेश्चन देखो, आप इतने तो मैच्योर हो कि क्वेश्चन देखकर आपको समझ आएगा कि कितनी इन डेप्थ बात पूछी जा रही है, और क्या आप रेडी हो इतना इन डेप्थ पढ़ने के लिए, या क्या आप इतनी क्रैमिंग कर सकते हो, या क्या इतना समझ सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चंस इन हिस्ट्री पेपर एंड इकोनॉमिक्स पेपर आर वे डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. हिस्ट्री में they will ask questions on 1857's revolt, non-cooperation movement, why it was a failure, Cripps India mission, what was that, right, Simon commission, what was it, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, right, art and architecture, sculpture, etc., Gandhar art, etc. But in economics they will ask question the impact of the lockdown on India's economy, right, or the impact of liberalization, privatization, globalization, how it impacted India's economy, critically comment, right. So by going through the question now, you will understand the in-depth study that you require to answer such question. क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये समझ आ जाएगा भाई मुझे कितना in-depth पढ़ना है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. According to that you can filter out the subjects further. Now you will be left with 1 or 2 subjects. अब मान लो आपने देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पेपर. लेट अस लुक एट अ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट. ओके, सो आई हैव डाउनलोडेड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 2019 क्वेश्चन पेपर. ठीक है, पेपर 1 मैंने इधर डाउनलोड किया. दिस इज पेपर 1. Over here you can see there are 8 questions divided in 2 sections and printed both in Hindi and in English. Candidate has to attempt 5 questions in all. 8 question है जिसमें से 5 question ही attempt करने हैं. And out of that question number 1 and 5 are compulsory. Now not 1 to 5, 1 and 5 are compulsory, and out of remaining any 3 are to be attempted. Choosing at least 1 question from each section. This is condition कि हर section में से एक question तो आपको choose करना ही है. ठीक है. So public administration question number 1, you have to answer in 150 words, that means 1.5 page. Public administration is constantly being reinvented because it is contextual. In 10 marks, elaborate. ब्यूरो विकृति लोक प्रशासन का निरंतर पुनः आविष्कार किया जा रहा है क्योंकि यह प्रसंगानुश्रित है. विस्तार से स्पष्ट कीजिए. So here you will understand in question number 1 itself आप समझ जाओगे that in public administration you do not have to cram topics. Cram नहीं करना. You have to understand in detail about the role of public administration itself. आपको public administration का role ही detail में समझना है. That it is being constantly reinvented. That means the style of governance they are constantly changing it. Public administration constantly reinvent किया जा रहा है. बार बार इसका आविष्कार होता है. What is public administration? लोक प्रशासन. That is handling or administering people. That is going to be your job after you become an administrator, right? जब आप IAS, IPS, IRS बनोगे आपको करना क्या होगा? लोगों के accounts, लोगों को administer ही तो करना होगा, right? So your role is being reinvented because it is contextual. अब contextual का मतलब क्या होता है? What do you mean by the term contextual? It's a very deep question that they have asked, and they have asked you to answer it in just 150 words. That means you have to be simple in your answer writing format, but सिंपल भी रहना है आपको, बट योर in very less words you have to explain in detail, in depth. That means your words, the detail, the depthness of your words will be checked by the examiner. आपकी बातों में, शब्दों में कितनी गहराई है उसको चेक किया जाएगा. Now you understood what they are demanding from a future administrator. This is how you will understand that if I am built up for this subject or not, or if I can develop myself
to reach the level of this subject or not. ये questions, सारे question पढ़ने के बाद ना आपको ये समझ आने लगेगा कि क्या मैं इस subject के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता हूँ. Am I interested in these interesting topics? I'm going to govern. I'm going to help government frame the policies. I'm going to implement them on the behalf of government. I'm going to administer the people. So am I interested in public administration? And if I am interested in this subject, will I be able to do justice with this subject? क्या मैं इस subject के साथ justice कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? Right? So this depthness is required from your side in public administration. Contractualism has become a favorite policy of neoliberal forces, but not without its share of controversy. Right? That means argue. That means critically you have to answer it. राइट एंड हियर यू डू नॉट हैव टू बी नेगेटिव. इधर आपको नेगेटिव भी नहीं होना, आपको बहुत न्यूट्रल स्टैंड लेना है. फेलियर टू डिस्कार्ड इट्स एलिटिस्ट कैरेक्टर एंड वेस्ट सेंट्रिक ओरिएंटेशन, राइट, has led to the decline of comparative public administration. Explain. Again 10 marks. Failure to discard its elitist character and west centric orientation has led to the decline of comparative public administration. Right? यानी कि वेस्ट सेंट्रिक ओरिएंटेशन आ जाता है ना एक ब्यूरोक्रेट में. एलिट होने का एक टैग आ जाता है, भैया ब्यूरोक्रेट हो. ब्यूरोक्रेट वर्ड ही एलिटिस्ट वर्ड हो जाता है. तो इसकी वजह से ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिक्लाइन देखा जा रहा है. तो क्या आप एग्री करते हो? एक्सप्लेन करो. अब इन्होंने ये नहीं पूछा डू यू अग्री. दे आर नॉट आस्किंग डू यू अग्री. यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट by giving examples. And if you even do not agree, then also you have to give proof. अगर अग्री नहीं भी करते तो प्रूफ दो क्यों नहीं अग्री करते. ठीक है. So this is how in detail you have to study. Now let us have a look at history optional question paper. So over here you can see this is history optional paper 1. ठीक है. Now always remember that in paper 1 of history optional, section A will be always 50 mark section related to map. सेक्शन ए हमेशा 50 नंबर का होगा और मैप रिलेटेड होगा. दे विल गिव यू अ मैप एंड देयर विल बी पोजीशंस व्हिच विल बी मार्क्ड ऑन द मैप. यू हैव टू नेम देम. दे विल गिव यू हिंट आल्सो. वो आपको हिंट भी देंगे. ब्रिक टेम्पल साइट ओवर हियर आप देख सकते हो. राइट, दिस इज ओवर हियर ब्रिक टेम्पल साइट. यू हैव टू नेम इट. सो हियर in detail map work is required in history optional. So are you ready for giving that much of effort in map work? Right, इतना effort map work में देना पड़ेगा. By looking at the question paper only you will understand if you are ready for this optional or not, or you are built for this optional or not. Right, then do you agree that archaeological evidence often helps in the better understanding of literary sources? This question directly has been taken from Spectrum chapter 1. Spectrum का chapter 1 है ना, directly literary sources, वहां से लिया गया. Direct question, 15 marks. The development of art and architecture during Sunga period belies the belief that they were anti-Buddhist. Discuss. Again, art and architecture, ये आपका आप पढ़ सकते हो NCERT से, IGNOU material से. IGNOU material on Sunga period. Right? You directly question has been taken from that. Did the mastery over agriculture act as a leverage for the rise of Harappan towns and cities? Discuss. You can see if you are studying history GSM 1, then you will be able to answer most of the questions in this paper. अगर आपने GSM 1 प्रिपेयर कर लिया ना तो आप इस पेपर में से ना कम से कम 70% क्वेश्चन खुद ही इजीली आंसर कर सकते हो. 70%. Examine how transformation of Varna system from Rig Vedic to later Vedic period affected position of women. Again, you can easily answer this question in 15 marks. 15 marks question if you have studied हिस्ट्री फॉर जीएस पेपर 1. तो ये इजी हो जाता है. सी हिस्ट्री ऑप्शनल यू हैव टू प्रिपेयर मैप वर्क एनी हाउ, वो तो आपको करना ही पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए. राइट, एंड फॉर जीएसएम 1 सो इट्स वेरी ऑब्वियस. और सी इन द मैप वर्क ना यू कैन इजीली गेन डायरेक्ट 50 मार्क्स. 50 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे. एंड ऑल्सो यू हैव टू ना राइट अबाउट ईच ऑफ दीज प्लेसेज इन 30 वर्ड्स. 30 वर्ड्स में ना मतलब बहुत छोटे से एक 4-5 लाइन्स में आपको इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना भी होगा. ठीक है. सो ओवर हियर 50 मार्क्स आर वेरी इजी टू गेन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड मैप वेरी इंटेंसिवली. अगर आपने मैप बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया तो 50 नंबर आपके हो जाएंगे. सो हियर यू कैन सी assess the rule of Zainul Abidin in Kashmir, examine the status of Sanskrit in Mughal India, discuss how Vijayanagar Empire became cultural capital of South. You can see direct questions coming from GSM paper 1 syllabus. Sufi and Bhakti movements, ये सारे क्वेश्चन ना डायरेक्टली आ रहे हैं आपके कहाँ से? GSM 1 से. So you can look at history optional also. So this is how you have to select your optional. Go first of all identify 5 subjects on the basis of your interest and on the basis of their syllabus clashing with GS papers and prelims. Then after selecting 5 subjects, go through their syllabus.
Then you will identify only 2-3, you will choose only 2-3 subjects. Then you have to download previous 3 years question paper, and then after going through the question paper na, and the next step is resources. After going through the resources also, ये भी देखना है कि resources available है या नहीं. Online you have to search if their resources are available or not. For example, history spectrum book is required, IGNOU material is required. You can purchase IGNOU material from Amazon also. Then what else is required? Question papers you can download, syllabus you can download from UPSC's website, right? Or you can Google search it. Then the Rajiv Ahir book you have to purchase. Then Bipin Chandra if you are studying that, or NCRTs, economics के लिए Sanjeev Verma, or art and culture के लिए Nitin Singhania, Ramesh Singh, right? Ramesh Singh is also there. So these different authors and strategies of toppers में अब अगर आप देखोगे, for example you have selected economics, finalized economics as your optional, then go through topper strategy, right? पिछले साल के 2019 के या 2018 के topper strategy को देख लो. Topper strategy में you have to do not have to look at the way they studied, no, your way is unique. You just have to go through the resources that they selected, because every topper has the same resource, and keep your resources limited. ये नहीं है कि 10 toppers की strategy पढ़ के 20 किताबें मंगा लिए, आप रो रहे हो बैठकर. ऐसा नहीं करना. Do not go through 10 topper strategy and order 20 books and then cry. No. Go through only one topper strategy. एक ही topper की strategy चुननी है. Either he can be or she can be from 2019, 18, 13, 12, etc. But go through the last year's topper strategy. ठीक है, last year के topper की strategy निकालनी है. If you are preparing for 2021, go through 2019's topper strategy. ठीक है, 2019 के टॉपर स्ट्रैटेजी को देख, टॉपर्स के लिस्ट, सॉरी 2020 के टॉपर्स का लिस्ट निकालो, 2019 सॉरी राइट 2019 का टॉपर्स की स्ट्रैटेजी निकालो, और 2018 राइट जुनैद अहमद सर इज ऑल्सो देयर, प्रदीप सिंह सर इज ऑल्सो देयर, राइट कितने सारे टीचर्स हैं, टीना डाबी मैम इज ऑल्सो देयर. गो एंड पिक एनी वन टॉपर एंड गो थ्रू हिज स्ट्रैटेजी और हर स्ट्रैटेजी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट purchase the material or identify the resources. 3-4 books are required, that's it. किसने बोला है कि 15 books पढ़नी है? No. The people who are telling you to study 15 books, they are mad themselves. You just have to go through 3-4 books, keep your limited resources limited, and practice as many questions as you can. कोई भी topic complete करते हो, if you are completing any topic in your optional, try to download the previous year question paper and identify the questions which were asked from that topic. For example, you have studied today regarding Kushan period. मान लो आपने कुषाण पीरियड पढ़ा है आज, right? If you have selected history optional and let's say you have studied Kushan period, then identify the question on Kushan period in previous year question paper. For example, this question: flourishing international trade during Kushan period gave tremendous impetus to development of art. Discuss. Try to answer it, right? इसको आंसर करने की कोशिश करो, right? So likewise you have to prepare. इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, right? So you will be confident also, and also join any test series. कोई test series भी join कर लेना after you complete at least the syllabus of paper 1. पेपर A का अगर syllabus complete कर ले हो ना, तो test series join कर लेना, so that you can test your performance also, test your तैयारी also, okay? And also you can, if you think that you need guidance, अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि extra guidance की जरूरत है, if you think you need extra guidance, you can take optional subscription on Unacademy. Unacademy पे आप optionals का subscription ले सकते हो. You can get 10% discount also by using this code Sharma20. So this is up to you कि आपको कैसे तैयारी करनी है, but I have told you the way how to select the optional, right? The strategy you have to make yourself, but I have just told the way on how to select a particular optional, and always select that optional whose resources are easily available. For example, if you select zoology and zoology's resources are not available, then what you will do, right? So that is why I was saying identify 5 subjects, go through the resource also. If the books, the notes online, they are available or not, then only select that particular subject. Okay? So make your preparation easy, make your preparation journey easier by making a strategy. I hope you enjoyed today's class. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.